कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के एक और मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो 2025 नवंबर से दिसंबर में जो एग्जाम चल रहे हैं हम उन्हीं के ऊपर मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का पेपर का टाइटल क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक रिटन एग्ज़ाम का पेपर है, तो ऐसे स्टूडेंट जहाँ पे जिनके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्ज़ाम ना होकर रिटन फॉर्म में एग्ज़ाम हो रहा है तो वो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ एमसीक्यू एग्ज़ाम हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जो क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू के भी वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और उसी सेम प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे रिटन के भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो रिटन के स्टूडेंट रिटन की और प्रैक्टिस के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड नेम इट्स थ्री मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. It helps organize biological diversity systematically. The three main components of taxonomy are identification, which involve recognizing organisms, nomenclature, which assign scientific names, and the third one is classification, which groups organisms into hierarchical categories based on similarities. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, what are the main function of a herbarium? तो a herbarium preserve dried pressed plant specimens on a labeled sheet for scientific study. Its main functions include aiding plant identification, serving as reference material for taxonomy, supporting research on flora and biodiversity, documenting geographic distribution, and preserving type specimens. Herbaria also provide data for ecology, conservation planning and educational purposes. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ग्रुप्स प्लांट यूजिंग अ फ्यू superficial characters such as lineage, sexual system based only on stamens and pistils. It often places unrelated plants together. Natural classification uses many morphological characters to group plant by overall similarities and natural relationship. As seen in Batham and Hooker system, it is more scientific than and accurate. ठीक है, next, write a short note on the principle of priority in a botanical nomenclature. The principle of priority states that the earliest validity published name for a plant taxon must be accepted as its correct scientific name. This rule established by the ICN ensures stability and prevents confusion caused by multiple names. Names published later are considered synonyms unless conserved under special provisions. ठीक है, next, mention any two taxonomic evidences obtained from molecular biology. Two important molecular evidences used in taxonomy are: first one, DNA sequencing, which reveals genetic relationship and helps construct phylogenetic trees, and the second one, protein and enzyme analysis such as electrophoresis, which identifies variations in biochemical markers. This technique provide precise data for determining evolutionary relationship and resolving complex taxonomic problems. ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी की बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ फ्लोरा एंड कीन इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन। तो फ्लोरस एंड कीज are essential tool for accurate plant identification. A flora is a comprehensive region-specific account of a plant species, providing detailed description, distribution, habit, flowering time, illustrations, and diagnostic characters. It helps botanists understand local biodiversity and compare unknown specimens with documented species. Keys, especially
Dic- Dichotomous keys guide user through a step-by-step process of selecting, constructing characters until the correct species is reached. They simplify identification and reduce confusion by eliminating non-matching taxa. Multi-access key further allow flexible character choice and computer assigned identification. Together, Flora and Key provide systematic, reliable, and user-friendly mean to identify plant species for research, conservation, and ecological studies. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब बैथन एंड हुकर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू सीरीज लेवल. तो बैथन एंड हुकर सिस्टम जो कि 1862 से 1833 के आसपास में इस्टेब्लिश हुआ था. Present in genera Plantarum is a natural morphological classification widely used in herbaria. They divided Phaneroderm into three major classes: Dicotyledons, Gymnosperm, and Monocotyledons. Within Dicotyledons, they recognize three subclasses, that is Polyplatae, Gemoplatae, and Monoclamidae. Each subclass was further divided into series based on floral characters. For example, polypetal includes series such as Thalamiflorae, Discliflorae, and Calicliflorae, distinguished by the arrangement of petals and the position of the ovary. Their classification relied on observable characters and placed related families together, making it practical for identification. Although not phylogenetic, it serves as a foundation for many botanical studies and herbarium arrangement. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन, explain the economic importance and key features of the family Fabaceae. Fabaceae, also called leguminous, include herbs, scrub, and tree which composed leaves and papilionaceous flower. The floral structure show a standard wing and keel with diaphanous stamens and a single carpel forming a legume root nodule containing nitrogen-fixing rhizobium bacteria. Economically, Fabaceae is one of the most important plant families. It provides major pulses such as pea, gram, lentil, and soybean, essential for protein-rich diet. Oil-yielding plants like groundnut and soybean are widely cultivated. Timber trees such as Dalbergia and Patercropus are valuable in furniture and construction. Several species like Indigofera yieldii, while Sesbania and Crotalaria enrich soil fertility. Many members are also used as a fodder and ornamental. चौथा क्वेश्चन, what are phenotypes and numerical taxonomy? Describe their basic method. So phenotypes or numerical taxonomy classifies organisms based on overall similarity using quantitative data rather than evolutionary relationship. It treats all observable characters equally, including morphological, anatomical, biochemical, and psychological traits. In numerical taxonomy, characters are coded numerically using as 0 and 1, and similarly between taxa is calculated using mathematical indices. Cluster analysis, similarity matrices, and computer algorithms generate dendrograms showing relationship. The goal is to achieve objective reproducible classification free from subjectivity. Phenotypes was developed to overcome limitation of traditional system, and it formed the foundation of modern digital and molecular taxonomy.
Although not evolutionary, it remains important for comprehensive data analysis and grouping. ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट डाउन। दो क्वेश्चन है, डिजिटल टैक्सोनॉमी और एक और है डेल्टा सॉफ्टवेयर, दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहले बात करते हैं डिजिटल टैक्सोनॉमी के बारे में। तो डिजिटल टैक्सोनॉमी यूज डिजिटल टूल्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक टू इनहेंस प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। It incorporates online database, high resolution image, molecular data, machine learning models, and interactive keys. Digital herbarium collections also allow global access to plant specimens, DNA barcoding, and automated recognition system. Improve accuracy. Digital taxonomy increases speed, standardization, and accessibility, supporting large scale biodiversity research and conservation. दूसरा, डेल्टा सॉफ्टवेयर। डेल्टा का फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी is a computer program used to create standardized taxonomic description and multi-access keys. It enhances coding of characters in a flexible format and generate descriptions, diagnostics key, and interactive identification tool. Delta support large data sets, making it useful for revising floras and monograph. It improves accuracy, consistency, and efficiency in taxonomic documentation. ठीक है, तो सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब सेक्शन सी की बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ द ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, रैंक, टाइप, मेथड एंड ऑथर क्राइटेशन। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहा, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ इंग्लर एंड प्रेंटल एंड द एंग्लोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप APG थर्ड। तो इस क्लास को इतना ही रोकते हैं, मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।